Record the session. Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So today we talk about the AVL tree first and then the threaded binary tree. Okay, firstly, Yes. AVL tree. As we were discussing yesterday, that we said we have a linked list which was having a big O of n complexity if you want to find in the worst case some element, because if say these are some 20 lakh elements and you want to find the last element and you have to take 20 lakh iterations to find it, right? Now, Yes. to mitigate this problem, we use the tree structure which actually compressed this length into this stuff. Then we said binary search tree, where we does what? We compressed it as a tree, binary tree, but also we also make it in the search friendly, wherein we do what? We said that anything we have here is something on the left subtree is gonna be less than the root, and anything on the right subtree gonna be greater than the root. Greater Okay, than root. but Yes, sir. the problem arises, like we discussed yesterday, that if we have the data to be filled like this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, it's a sequential order, for example. So we say 1, then the 2 goes on a right, 3 goes on a right, 4 goes on a right, and so on. So again, the tree structure which gives the logarithmic complexity, okay, which gives Yes, logarithmic sir. complexity, log of n, now has changed it to n again, back to n. So we didn't get any benefit. So we said we need to balance it. We need to what? Yes. Balance. We said we need to balance it. We need to balance this structure, right? Yes, sir. So how we do the balancing in the AVL so that our tree becomes the same log of n. The complexity becomes log of n. Okay? Log to the base 2 of n, big O of log to the base of 2 of n. This should be the complexity, not the big O of n. Because n means if you have n nodes, in the worst case, you need to have the n iterations. But Yes, log sir. of n means if you have, say, I told you some 10 lakh 4,000 something expressions, because this is 2 raised power 20, 2 raised power 20 is this much. So if we have 10 lakh 40,000 something nodes, it will take only 20 iterations in a worst case. But if it is in log n, so if we have 1 crore nodes, It it will will take take 1 1 crore crore iterations. iterations. But in this case, it will take maybe some 25 iterations only in the log of n. So Yes, sir. it's highly very कहाँ 25 और कहाँ 1 crore, आप खुद ही देख लें कितनी फर्क है. Yes, sir. So if you have petabytes of data, it will hardly go like some 30 iterations. Okay, because 2 raised by 30 is a huge number. So it's unimaginably big number. So, but Yes, if sir. you have the log of n, so you need, say, if you have 1 trillion data, you have to take 1 trillion iterations. So it's not going to help. So we want to do what? We want to balance this skewness, the skewed Yes, tree. We want to balance it and get it back into this shape, where the depth goes shorter and shorter and logarithm. Okay. So yes, sir. why we use AVL trees? To create a balanced binary search tree. Okay. Balanced binary search tree. But we need to maintain it, because we don't guarantee that things happen, because things may happen like this or may happen like this, left skip, right skip. Yes. So the moment we see there is an imbalance, we need We to will do apply the rotation. balancing tree. Firstly, what is the AVL? It is the Adelson, Velsky, and Landis. Okay, there was the Adelson and Velsky and Landis. They actually created this tree. Okay. Yes, sir. So we need to have a tree always in a scenario that the balancing factor which we're talking about can be
either -1, can be 0 or 1. What is the balancing factor? Balancing factor is height of left tree minus height of right tree. Okay, the height of left tree Yes, sir. minus height of right tree. It should come either -1 or 0 or positive. Or 1. ठीक है ना? Yes, sir. Okay, so that means if we have a node, say for example 50, and we have some left subtree and we have some right subtree, okay, if the height of the left subtree is for example 3 and the height of the right subtree is for example 2, so balancing factor of 50 will be 3 minus 2. That is how much? 1. So 1. it is acceptable. It is what? Acceptable. Acceptable. Say for example we got here some nodes, like we got a 50. Okay, now what is the balancing factor here? What is balance factor for the 50? Because there is 0 on the left, 0 on the right, so it's going to be 0. So 0 is allowed because -1, 0 or 1. 0 and 1. Now we add some nodes to the 50. Say for example we add 40 to the left. So what is the balancing factor of 40? 0 minus 0, that is 0. What is the balancing factor of 50? That is what? What 50? You're gonna say hi here. Say hi in the camera. Hi. Hi, Zach. How are you? He's not master. Are you fine? She's not my girl. She's my student. Okay. Student. Yeah, you gotta go now. Okay. Bye-bye. I'm teaching. Bye. Bye. You gotta go down. Go quick. No, you can't stay here. Okay, I'll close the camera. I'm gonna teach. You go. Okay, baby. Now, if I say 50, its left subtree is 1. Okay, and right subtree is 0. 1 minus 0 is 1. So it has a balance factor of 1. That's acceptable 1. because -1, 0 or 1. Acceptable. Right? Yes, sir. Now we Yes, have sir. got, say for example, we have got 60 on this side. Now 60 will have 0 balancing factor because nothing on the left, nothing on the right. 40, nothing on left, nothing right, 0. What about 50? 1 on the left and 1 on the right. 1 minus 1 is 0. So it's a 0, 0 is acceptable. Right? Yes, sir. Then we want to add more nodes to it. Say for example, we are adding 30 to here. We are adding 30 on this side. Then you add 30 on this side. Okay, what will happen? Yes. What is the balancing factor of 30? That is 0. What is the balancing factor of 40? That is 1 on this side, 0 on this side. 1 minus 0 is 1. 0. Perfect. 1. So what is the balancing factor of 60? If 60 is 0, whatever the balancing factor of 50? 50 is 2 on the left and 1 on the right. 2 minus 1 is 1. So 1 is also acceptable. So it is also acceptable. So it is an AVL tree. It is an AVL tree because this balance factor is in the range of -1, 0 or 1. -1, 0, 1 and 1. Right? Yes, sir. Okay, so balancing factor is still okay. But if the balancing factor is 2, if balancing factor is what? 2. So if I have a 50 here, say 40 was here and 60 is here, now 30 is here, so you want to add 20. What will happen here? If you say 20 is here. Rotation. What is the balancing factor of 20? Balancing factor of 20 is 0. What is 30? Balance factor 30? 1 minus 0, that is 1. What is balance factor of 40? That is 2 on this side and nothing on this side. The balance factor is 2. Balancing factor is what? 2. The moment balancing factor goes 2, which is out of range, so this node, while inserting 20, while inserting what? 20, we got an issue here. Balancing factor, which has, because we want to fix something which has a balancing factor of 2. This is where we do the rotations and we want to fix, but we want to fix home, which has balancing factor of 2 or more. Right? Yes, sir. In fact, yes, sir. We will not allow more. In fact, in AVL tree, we will not allow more because we are not going to add anything unless and we don't balance it first. Okay, na? So the moment balancing factor is 2, we say it is not an AVL tree at all. So what we do, we want to balance it. Now we need to balance it. And how we balance it? We balance it by the rotation. Rotations. Okay.
So Yes, sir. when we are going to balance it, so when we are trying to insert the element, okay, and the balancing factor is something which is out of range, then we say we need to have somewhat rotations. So when we rotate, when we have balancing factor 2, okay, not in a range, Yes, sir. whatever, No. okay. And Yes, to sir. balance, we need to identify what you call as an A, the A node. We call that A. We call that what? And who is A. A? The A is a guy which has a balance factor of 2. So this is my A. 40 is my A. We need to identify A. Okay. Ji, So sir. who is A? A is the guy which is not having the balance in the range of negative 0 or 1. It is something which has a balance factor of 2. It could sometimes be negative 2 also. Okay. Ji, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. And then we need to do the rotation to fix it. But rotations can be of many types depending upon. So we have rotation Left types. and right. We have rotation types. What we have? Left and right. We have left rotation. We also have the right rotation. We also have the left right rotation. And we also have the right left rotation. If you have LR and RL rotation, we need to do 2 steps. In LL and RR rotation, left and right rotation, we need to do only single step. Okay. In this, we need to first convert them into these, then apply what we do to the LL and RR rotation. Okay. For example, if it's LR rotation, first convert into LL rotation. And what we do to the LL rotation, that thing we will do here. So it's a 2-step process. Or we can do a trick to convert LR rotation also in a single step to the AVL tree. And product will be AVL tree. And product will be what? So if we give an example of left rotation, for example, LL rotation. Firstly, left rotation, because I told you LL and RR rotations are a single step process. LL and RR. So when will be LL rotation? For example, we have here a 50. We got 50 here. And now we have here 40, for example, and we have here, say, for example, 30. So is there any issue here? Can you tell me there is an issue, or is this an ability, or there is a balancing factor problem? Balancing problem. Where is the balancing problem? Which node? 40. No, 40 has 1 on 1 this side and 0. 1 minus 0 is 1. Its balance factor is 1. Its balance factor is 0. 50. Yeah, 50 has problem because there is no right child. Right child is 0. Left child are 2. 2 minus 0 is 2. So balancing factor is 2. So the guy which has a balancing factor of 2 will be called as A. Okay. And then we have left and left. So because A, the node on the A is left. So this is called as a left rotation. This is called as what? Left rotation. Does it make sense? We need to fix it. Okay. We will fix it. But first, let us try to see what is the other rotations. This is left rotation. For example, what could be the right rotation? Now this is quite right rotation. So what is right rotation? So say for example, this is 50 and I got a 60 on this side and I got a 70 on this side, because this is a BS binary search tree. If you want to add 60, that's here. So what will be the balance factor of 70? It's going to be the 0. What is going to be 60? 1. 60 has 0 minus 1. That is negative 1. What about 50? 2. Minus 2. How 2? Because left is 0, right is 2. So 0 minus 2, that is negative 2. Negative 2. So negative 2, this is going to be my A. This is going to be my A. And this is right to it. This is right to it. So we need to apply right rotation. We could have a different version of this also. You can have a different version of this. Say this is for example 50. And I got on this side 40. Okay. And now I got here 60. Then I got here 70. Okay. And I got here, for example, 80. What is the balancing factor of 80? 0. What is balance factor of 70? Negative 1. What is balancing factor of 60? Negative 2. Negative 2. Yes. Right? Sir. Yes, sir. See, if we just simply remove the 80 firstly, and if we have the tree like this,
So what is the balancing factor of 60 now? What's the balancing factor of 70? 0. What's the balancing factor of 60? That's going to be 0 minus 1. -1. That is -1. What is the balancing factor of Hmm. 50? No, 0 This is 1 minus minus. and 2. This is on this side 2. On left child is 1 height and right child height is 2. And now 1 plus 1, 2. So 1 minus 2 is -1. That is perfect. We don't have any issue here, right? Issue will come. Yes, sir. Issue will When we come add next node when we add one on more the node. right side. I'm adding one more node to the right side, 80. Now Right balancing side, factor yes, changes. sir. This is 0. This will be -1 and this will have -2 because on this Yes, sir. side is 0, on this side is 2. 0 minus 2 is equal to -2, right? -2. Yes, sir. In fact, 50 will also have -2 because on this side is Yes, 1 and on this side is 3. This is 1 yes. minus 3, that is -2, -3. right? -2. But Yes, sir. we will go from here to 60 only because 60 was -2 firstly. We need to first fix the 60. So this is going to be my A and this is going to be right. Okay. Yes, sir. So this is the A which we need to fix and this is the right. Later we will see Right, about right. 50. 50 is also in a out of range, but first 60 is in a contention. So 60 is we need to fix first 60. Right? Here we need to first fix 50. We need to fix 50 because A is 50. समझ में आ रही बात? Yes, sir. So what about the LR rotation? Now we have LR rotation. Left right rotation. Left right rotation. So this is for example 50 here. Now we got here for example on the left say 40 and on the right of 40 is 45. But both of them are to the left of 50, but one is to the left and another is to the right. What about what's the balance factor of 50? What is balancing factor of 50? Huh? 50, 0, 1. Right side 0. Right Left side to side 0 है. Left side कितने हैं? 2. So 2 minus 0 is 2. 2. The moment we do it, we say, hey, this guy is a problem. But Yes, what sir. is the rotation here is left right rotation. Left right rotation. We have a left First and हम करेंगे left right को left पे shift, उसके बाद एक और rotation देंगे. we can convert into left and then we can do, or we can do a single step process. ठीक है, better is to do single step. ठीक है जी? जी sir. Now we may have the right left rotation, RL rotation. So what is RL rotation? Right. We got a 50 and something on the right. Okay, that is And R. something on left. Then something on the left, that is 55, for example, on the left. And this 50 will be called as A because why? Why is 50 problem? What is the balancing factor of 50? It's going to be 0 minus 2, that's -2. 0 minus 2. -2. But it is something on a right and something on a left. Right left rotation. When there are right left rotation, we actually not want to find A only, we also want to find B and C also. See that. Okay, but this is right left rotation. We need to apply right left rotation. Now, when there is a rotation like we have the LL and RR, if you have these two rotations, for both of these cases, we have to identify A and we have to identify B. B is the immediate next node to the A. Okay, child of A. B is what? Child of A. अब B जो है child of A इधर से हो सकता है या child of A इधर से हो सकता है, जो भी है. यानी कि A आपने आइडेंटिफाई किया ना, जैसे आपको फॉर एग्जांपल फर्ज कीजिए 50 था यहाँ पे, ठीक है. अब इसको यहाँ से 40 है और यहाँ से इसका 30 है, तो ये हो गया -2. यहाँ पे 2 आ गया इसका बैलेंसिंग फैक्टर. 2 minus 0 that is 2, क्योंकि यहाँ से 0 है ना, तो यहाँ से इसको 2 है. 1 plus 1 that is 2. The 2 minus 0 is what is balance factor of 52. So it is a problem. It's a what? Problem. लेकिन रोटेशन कौन सी लगेगी? लेफ्ट 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 है ना, दोनों है ना लेफ्ट लेफ्ट में. When there is a left rotation, we have to identify A and B. We have to identify what? A and A is the guy which has the balancing factor problem. This is my A, and immediate next node is the B. This is B. We need to identify A and B. And what you want to go do is make A child of B. अभी तक B child of A था ना, इसको उल्टा करो. A को child of B बनाओ. A को
चाइल्ड चाइल्ड ऑफ, और बी यानी कि बना। यहाँ पे जो बी है ये पापा बनेगा और बच्चा 50 बनेगा अब, यानी कि जी 40 विल सर। बी द पापा, द बी नोड, एंड ए जो 50 है वो उसके राइट में जाएगा क्योंकि उससे बड़ा है, ठीक है। और 40 के यस साथ सर। कौन सा यहाँ से है 30। 30। अब देखो इनकी बैलेंसिंग फैक्टर, इसका 0, इसका 0 और हाँ, इसका भी इसका 0। राइट से बड़ा आ गया और यहाँ से ये भी हो गया। परफेक्ट हो गया ना। तो आपका एल एल रोटेशन हो या आर आर रोटेशन हो, आपको करना क्या है, आपको ए देखना और बी है कि फाइंड ए जो करना है। आपका आइडेंटिफाई हुआ जिसको बैलेंसिंग फैक्टर इशू था, उसके बिल्कुल नजदीक जो नोड था उसका नाम बी है। अब बी बी उसका सर। बच्चा था, है ना, हाँ। क्योंकि बी ए का बच्चा था। अब आप एक काम करो, बी ही ए ही बी का बच्चा बनाओ, बस यही करना है दोनों रोटेशन में, एल एल जी हो या आर सर। आर हो। समझ में आई। अब बताओ, बताओ इस क्वेश्चन के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे 50 रखा और यहाँ से 60 और यहाँ से 70, 50 का बैलेंसिंग फैक्टर क्या है भाई साहब। राइट राइट रोटेशन। पहले बताओ 50 का बैलेंसिंग फैक्टर कितना है। सर राइट राइट रोटेशन। मैं कह रहा हूँ 50 का बैलेंसिंग फैक्टर कितना है। 0 2 0 -2 तो -2, जब -2 है तो प्रॉब्लम है। और जिस बंदे को -2 है उसको हम क्या नाम देंगे, ए। ए और जो इमीडिएट इसका नोड होगा उसको क्या नाम देंगे, बी। बी। सो बी चाइल्ड ऑफ ए था, तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये राइट राइट रोटेशन है, कि दोनों हाँ, राइट इसको राइट है, पेरेंट बनाना तो चाहिए बी हमें को। बी का चाइल्ड बनाना है ए, यानी कि 60 यहाँ रखना है हमें, और 50 से लेफ्ट छोटा है तो साइड इधर 50, जाएगा, राइट और साइड 70 70। 60 से बड़ा है तो यहाँ जाएगा, तो परफेक्टली हाँ। बैलेंस है कि नहीं। यस सर। ओके, अब एल आर रोटेशन करेंगे। जो एल आर अगर या एल आर हो या आर एल रोटेशन हो, हमने एल एल और आर आर में क्या कहा कि आप ए एंड बी को आइडेंटिफाई करो। ए वो बंदा करो है, ए हाँ। कौन बंदा है, हाँ जी, ए जो ए वो पेरेंट था बंदा उसको है फिर जिसको चाइल्ड बैलेंसिंग बनाना फैक्टर है। इशू है हाँ, ना। और उसको बी उसका चाइल्ड इमीडिएट, बनाना है। बी इसका इमीडिएट चाइल्ड, चाहे वो एल एल में हाँ हो या आर आर में हो, ठीक हाँ। है ना। अब बी ए का चाइल्ड था, अब उल्टा करो, अब ए बी का चाइल्ड बनाओ, खेल खत्म। हम्म। लेकिन आर आर और एल एल रोटेशन में क्या करोगे आप, आई मीन एल आर एंड आर एल रोटेशन में क्या करोगे आप, सिंपल चीज बताऊंगा, या तो आप पहले उनको कन्वर्ट करो, मतलब एल एल आर हम्म। रोटेशन है उसको एल एल बनाओ, आर एल हम्म। रोटेशन है उसको आर आर बनाओ, और फिर ये चीज करो हाँ जो हमने यहाँ पे की, या तो वैसे करो हाँ। आप पहले, ठीक है। या आप क्या करो काम, या एक ही स्टेप करो, तो उसको आइडेंटिफाई करो, ए बी एंड सी, क्या आइडेंटिफाई करो, ए बी एंड सी। ये 3 नोड आप करो आइडेंटिफाई, और फिर क्या करो काम, ए एंड बी दोनों बनाओ चाइल्ड ऑफ सी, ए एंड बी को हम्म। दोनों को क्या बनाओ, चाइल्ड ऑफ चाइल्ड ऑफ सी। सी, दोनों को चाइल्ड ऑफ सी बनाओ। वो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे पहले से समझेंगे हम, ये 50 है, इसके लेफ्ट में गया 40, तो गया एल, और इसके राइट में गया फॉर एग्जाम्पल 35, या सॉरी 35 नहीं, जस्ट 45। सो दिस इज एल आर रोटेशन, क्योंकि इसका जो 50 है, हम्म। यहाँ से 2 है, यहाँ से कुछ नहीं है, तो -2 निकला इसका, तो -2 जब जी निकला, सर। जो ही -2 निकला, तो ये प्रॉब्लम में है, ये 50 प्रॉब्लम में आ गया इस 45 के भरने से। तो उसी वक्त हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ये मेरा ए ए हो गया, ओके, ए मेरा बी हो गया। और 40 जो बी लेफ्ट हो में गया। है वो बी हो गया, और ये वाला बंदा जो सी है हो वो किस में गया। हो गया, सी है, सी। क्योंकि रोटेशन कौन सी लगी, एल आर रोटेशन। एल आर हम्म। रोटेशन में क्या करेंगे, ए और बी जो दोनों है उसको चाइल्ड ऑफ सी उसको बनाएंगे, चाइल्ड बनाएंगे सी का। तो यानी कि इस सूरत में 45 पापा बनेगा, लेफ्ट और जो साइड 40, 40 राइट है, साइड 40 कहाँ 50। जाएगा, इसके लेफ्ट, लेफ्ट साइड। और 50 कहाँ जाएगा, इसके राइट साइड। राइट साइड, तो हो गया खेल खत्म, ठीक है। जी सर। पास में आई ना। यस सर। या इसका दूसरा तरीका भी कर सकते थे, कि पहले पहले आप इसको इसको एल लेफ्ट एल लेफ्ट ला रोटेशन बनाओ, सकते थे। इसको एल एल बना, हाँ, एल एल में क्या करेंगे हम, जो सी है वो बी का वो चाइल्ड बनेगा ऊपर पहले, जाएगा। यानी कि हाँ, 50 इधर है, तो ये 45 यहाँ 45, जाएगा, और 40 40 यहाँ लेफ्ट जाएगा। में जाएगा। अब बन गया एल एल रोटेशन। हाँ। एल एल में हम क्या करते हैं, ए एंड बी, अब ए बी और बनाओ बी। चाइल्ड ऑफ, बी बनाओ चाइल्ड ऑफ ए, है ना। एल एल रोटेशन में क्या करेंगे, बी जो है मेरा वो चाइल्ड ऑफ ए बनेगा ना, बी हाँ। चाइल्ड ऑफ ए है, अब ए बनाओ चाइल्ड ऑफ बी, यानी कि 45 ऊपर जाएगा,
और 50 नीचे आएगा और 40 इधर आएगा। ये समझ में आएगी बात है? नहीं, तो सेम ही आ गया ना, जी अब सर। हाँ ये सेम ही आ गया। ठीक है, इसी जी तरीके से सर। मेरे पास है आर एल रोटेशन। क्या है? रोटेशन। आर एल रोटेशन में क्या करेंगे कि हमारे पास 50 है और 60 गया इधर, और इधर से कौन जाएगा? 55। हम्म 60 का छोटा, दोनों दोनों इससे बड़े हैं, तो ये राइट में गया और ये लेफ्ट में गया। और 50 का जो है, जो ही मैंने 55 भरा, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर चेंज हो गया टू -2, -2। क्योंकि यहाँ से 0 है और यहाँ हाँ से दो 0 है, चाइल्ड्स हैं। यहाँ से 0 2 माइनस है, टू 0 इज -2 इज -2। -2। जो ही -2 है, तो ये वाला इशू इशू हो गया कब? जब मैंने ये भरने की कोशिश की 55, 55 जी तो सर। 50 प्रॉब्लम में आ गया। तो हम क्या कहेंगे भाई 50 को, भाई साहब तू ए है, ये बी है और ये ये बी है सी है। और ये सी चाहे है। एल आर रोटेशन हो या आर एल रोटेशन हो, दोनों बनाओ चाइल्ड किसके? सी के। तो सी हाँ 55 हो गया, 55 आइडेंटिफाई करो। राइट साइड 60, लेफ्ट साइड 50। या दूसरा तरीका था कि पहले इसको राइट आर राइट आर राइट बनाओ। करेंगे। टू स्टेप हाँ प्रोसेस अगर करनी है तो पहले इसको क्या करो, इसको पहले आर आर 50 बनाओ। आर आर में अरर क्या करेंगे हाँ हम? 55 इसका पापा 50। बनेगा, तो 50 हाँ यहाँ पे आएगा, 55 यहाँ पे आएगा और यहाँ 60 पे यहाँ और पे आएगा। 60 यहाँ पे अब आएगा। 55, अब ये हो गया आर आर रोटेशन, ये हो गया हम्म ए और ये हो गया बी। अब बी को चाइल्ड हम्म बनाओ, ए को चाइल्ड बनाओ बी का, यानी कि 55 हाँ को इधर रखो और इसके लेफ्ट 50 साइड इधर 50 और जाएगा राइट साइड और 60। 60 इधर जाएगा। ये सेम है एज दैट ऑफ दिस गाय। ठीक है ना? जी सर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सर ये रोटेट नहीं करने होते हैं उस हिसाब से भी कि हाँ ज्यादा हाँ, नंबर कौन सा है? मैं समझा नहीं, फिर से बोला। मतलब अगर 60 है, हाँ 55 है और 50 है, तो ये पता ही है जो ऊपर होगा उसके राइट साइड में ज्यादा होगा, उसके लेफ्ट साइड में होगा कम। हाँ, जैसे ज्यादा है उसका उसका मतलब उससे ज्यादा 60 है वो राइट साइड में, उससे कम 50 है वो लेफ्ट साइड एग्जाम्पल में, दो ना, उस हिसाब एग्जाम्पल से भी एग्जाम्पल बोलो। रोटेशन नहीं करनी एग्जाम्पल बोलो, होती क्या है। बोल रहे हो? एग्जाम्पल दो कोई प्रॉपरली। जैसे ए 50 है, फिर मतलब वहां पे फिर 45 है, फिर उसके बाद 60 है, जैसे 45 है, फिर क्या है? 60। 60, तो ये तो बैलेंस्ड है, फिर इसमें तो करना ही नहीं कुछ। ये बाइनरी सर कुछ सब्स्टिट्यूट भी है ना, ये आप बाइनरी छोटा बीएसटी है ना, नंबर बीएसटी। दीजिए। ये बीएसटी है ना? हाँ 60 में इसके मतलब हाँ ये तो गलत हो जाएगा 35। अगर 35 है, अब 35 पहले नहीं 55 रूट 45 उसके लेफ्ट में एक आएगा, मिनट, एक मिनट, उसके राइट में फिफ्टी आएगा फाइव फिर इज रूट, 50। ओके। फिर हाँ 45 लेफ्ट में है और 50 उसके राइट में है। 50 इसके राइट में होगा ना अब? हाँ हाँ, तो ये आ गया लेफ्ट राइट रोटेशन में। हम ऐसे भी करते हैं ना कि नंबर के हिसाब से अगर हम 45 ऊपर लाएंगे, राइट साइड से इसको 55 आएगा, फिर फिर इसके उसके राइट में भी 50 आएगा। वो तो सेम ही मुझे लगता है आप सेम ही बोल रहे हो। देखिए अगर हाँ ऐसा लेकिन वो सिचुएशन है, वापस अनबैलेंस हो जाएगा। देखिए अगर ऐसा सिचुएशन है ना, ऐसी सिचुएशन, इसके दो तरीके हैं। या तो पहले इसको लेफ्ट लेफ्ट बनाओ, यानी कि अगर ये 55 है, तो इसको लेफ्ट लेफ्ट बनाने के लिए पहले 50 इधर चलाओ, क्योंकि हाँ मुझे पता है 50 जो है इससे बड़ा ही होगा अगर लेफ्ट राइट। हम्म अगर ये अगर ये 50 नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ 40 होता, तो फिर हमें हाँ कोई इशू नहीं था, वो फिर लेफ्ट 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 में ही ही था, होगा। फिर लेफ्ट लेफ्ट हाँ था। अगर ये इस साइड गया है, लेफ्ट राइट इसने बनाया है, लेफ्ट राइट बनाया, तो मुझे पता है कि 50 तो बड़ा है इससे, 45 से, इसलिए हम्म मैं 50 लाऊंगा इधर और 45 को लाऊंगा इधर इसके लेफ्ट में। अब बन गया ये लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, अब हम्म उसमें 50 को ऊपर डालूंगा और 55 जाएगा आगे इधर, 45 जाएगा इधर। या सिंगल स्टेप में क्या करोगे इसको, अब बोलोगे ये ए है, ये बी है और सी है। अब क्या करोगे, दोनों को बनाओगे चाइल्ड ऑफ सी, यानी 50 पापा बनेगा 50। अब 45 किधर जाएगा हम्म इसके लेफ्ट और 55 किधर जाएगा इसके राइट। अब बोलो। हाँ जी। और चढ़ा, ये राइट में गया, ये लेफ्ट में गया। यही मैं बोल रही हूँ, मतलब लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन में जो आपने किया, ये हम नंबर के हिसाब से करते हैं ना शायद, जब ऐसा नंबर केस वंबर आएगा। सोचने की जरूरत ही नहीं है, नंबर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको लेफ्ट राइट रोटेशन है, जब आपको लेफ्ट और राइट रोटेशन है, उसका मतलब हाँ ही है कि जो राइट जब ये गया है ना लेफ्ट के बाद, ये बंदा इससे हाँ बड़ा है।
हाँ ये पता ही है कि ये जो बंदा है 50 ये इससे बड़ा है। इसका मतलब है कि मैं इसको अगर मैं ऊपर चढ़ाऊँगा तो ये 45 इसके लेफ्ट चला जाएगा, बन जाएगा लेफ्ट हाँ लेफ्ट रोटेशन। उसमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको कि मतलब है क्या उधर नंबर 45 था कि 20 था। क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये लेफ्ट गया है तो रूट से यहाँ से छोटा है और छोटा अगर है, इसके राइट गया है तो इस बंदे से ये वाला बंदा बड़ा है। बड़ा है। ठीक है ना? तो मैं 50 को ऊपर चढ़ाऊँगा इधर और 55 मुझे पता है ये हम्म बड़ा है तो ये क्योंकि ये दोनों लेफ्ट है, ये दोनों इसके लेफ्ट हम्म है तो मतलब ही है कि ये 55 कहाँ जाएगा? राइट में जाएगा और जब मैं राइट 50 में ऊपर जाएगा। चढ़ाऊँगा और 50 मुझे जी। पता है कि ये बड़ा है इससे तो 45 इसके नीचे ही जाएगा, है ना? हाँ। हाँ, यस तो सर। इसमें और तो कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है नंबर्स एंड ऑल, इसमें सिंपल रूल याद रखना है, खेल खत्म। बाकी तो हम्म पता ही है नंबर तो होंगे ही वैसे ही। कोई भी नंबर आप ले लो, मुझे पता है कि जब ये राइट जाएगा तो मुझे पता है कि इससे बड़ा है। अगर ये लेफ्ट गया है तो हम्म मुझे पता है इससे छोटा है। तो मैं इसको हम्म एलआर रोटेशन कर सकता हूँ। ठीक हम्म है? जी सर। ओके हमारे पास 7 मिनट्स है एंड वी विल ट्राई टू डू द थर्डेड बाइनरी ट्रीज। ठीक है? यस। इसकी एग्जांपल एक दूंगा मैं वीडियो वो करके ही है एग्जांपल इसके इसी के एग्जांपल्स इसके एवीएल ट्री के। रोटेशन एबिलिटी के। हाँ रोटेशन के एग्जांपल्स है वीडियो मैं चढ़ाऊंगा वो मैं अपलोड करूंगा। ठीक है? यू विल सी दैट। Now we will discuss what threaded binary tree. Do you have any idea about threaded binary trees? नो सर। कोई आइडिया नहीं है? नो। No issues. 1 second, I will take a sip of water. Okay, 1 second. यहाँ पानी सारा गिर गया यार, पैर ही खराब हो गया पानी से। Okay. Now we have the threaded binary tree. What? थर्ड बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री है हमारे पास लेकिन है थ्रेडेड। क्या है? थर्डेड। हाँ थ्रेडेड बाइनरी ट्री। व्हाट इज थ्रेडेड बाइनरी ट्री नाउ? कनकरेंट जो चले शायद। जी पता नहीं सर। नहीं कुछ बताया था आपने। हम थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री कहें या थ्रेडेड बाइनरी ट्री कहें, यानी कि थ्रेडेड हम बाइनरी ट्री को भी कर सकते हो बाइनरी सर्च ट्री को भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है हम्म आप किसको करोगे। ठीक है? लेकिन थ्रेडेड में क्या इशू है कि हमने पहले थ्रेडेड बाइनरी ट्री दो टाइप के होते हैं, या तो सिंगल थ्रेड होगा मल्टी थ्रेड होगा। या नहीं मल्टी थ्रेड नहीं डबल थ्रेडेड होगा। डबल डबल थ्रेडेड डबल होगा। से ज्यादा तो हो नहीं सकता। ठीक है? क्योंकि हमारा हाँ। जो नोड है, क्योंकि जो भी हम नोड बनाएंगे बाइनरी सर्च ट्री के लिए या बाइनरी ट्री के लिए उसमें लेफ्ट और राइट पॉइंटर दो ही पॉइंटर हमारे पास है ना, लेफ्ट पॉइंटर एंड हम्म राइट पॉइंटर, है ना? सो लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर मेरे पास है। मैं चाहता हूं कि अगर जो हम इन ऑर्डर ट्रावर्सल कर रहे थे, क्या कर रहे थे? इन इन ऑर्डर ऑर्डर ट्रावर्सल जो हम करते हैं, इन ऑर्डर ट्रावर्सल, इन ऑर्डर ट्रावर्सल। डबल। अब इन ऑर्डर ट्रावर्सल या तो आप करोगे यूजिंग द रिकर्शन, है ना, या करोगे यस। यूजिंग द स्टैक। हाँ। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो रिकर्शन और स्टैक है, ठीक है, उसमें चाहे आप रिकर्शन करो फिर भी उसमें स्टैक लगता है एंड ऑल, इट बिकम्स लिटिल स्लोअर एंड इट हॉग्स लॉट हम्म ऑफ मेमोरी, और मेमोरी भी यहाँ से मेमोरी भी खा रहा है और स्लो भी हो रहा है। मैं जी देख रहा हूं सर। कि अगर मेरे पास पॉइंटर खाली पड़े हैं,
तो मुझे पता है कि कभी लेफ्ट जाता है, कभी राइट जाता है, तो मेरे पॉइंटर्स कभी खाली पड़ जाते हैं, सबके राइट लेफ्ट हम्म, बन के नहीं होते। जैसे अभी हम नहीं कर रहे थे उसमें सारे के सारे हमारा ट्री फुल कंप्लीट नहीं था, तो नहीं। बहुत सारे पॉइंटर जो है ना उनमें नल होंगे। हम्म। ठीक है, तो हम अगर दोनों पॉइंटर्स को, लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर को इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल फास्ट हो, तो उसके लिए जो है फिर हमारे पास डबल ये जो लगेगा थ्रेडेड, वरना हमारे पास क्या लगेगा, सिंगल थ्रेड। यानी सिंगल थ्रेड। सिंगल थ्रेड लेफ्ट वाले को इस्तेमाल करेगा और डबल थ्रेड राइट वाले को भी इस्तेमाल करेगा, ताकि मुझे हम्म। रिकर्शन और स्टैक का इस्तेमाल ना करना पड़े ट्रेवर्सल के लिए। इसके लिए ट्रावर्सल। ट्रेवर्सल के लिए मुझे नहीं लगना चाहिए, आई मीन रिकर्शन एंड स्टैक। सो उसके लिए मुझे मेरे पास लगेगा थ्रेडेड बाइनरी बाइनरी ट्रीज। ट्री। ठीक है, सो हाँ। अगर हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, अगर आप मतलब हो सकता है इसका नोट भी आएगा ना, in order to make, विदाउट स्टैक एंड। in order traversal, अभी in order दो बार नहीं लिखना है, to make in order traversal विदाउट स्टैक इम्प्लीमेंटेशन एंड। faster, huh? हाँ। Faster without stack or recursion, without stack or रिकर्जन। recursion, we make b trees, we make b trees or binary search trees threaded। थ्रेडेड। बनाएंगे ना। हम्म। अब हम थ्रेडेड कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है, यस हम सर। बाइनरी ट्री को थ्रेडेड बनाएंगे, उसका राइट चाइल्ड जो मेरा होगा क्या होगा, उसका राइट चाइल्ड। जो राइट चाइल्ड होगा, ये जो राइट पॉइंटर मेरे पास होगा। लेकिन अगर ये नल है, क्योंकि अगर ये खाली है, अगर इसमें अगर इसको राइट चाइल्ड है तो ये तो ऑक्यूपाई ऑलरेडी है, मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर ये नहीं। नल है, ये क्या है, नल है, मैं नाल। देख रहा हूँ नल है, तो क्यों ना मैं इसको इस्तेमाल करूं, मैं क्यों इसको नल जी रखूं, सर। ठीक है। हम्म। इफ, तो ये इसको, ये किसको पॉइंट करेगा, जो इन ऑर्डर में सक्सेसर आ रहा है। ओके, हाँ। अगर इसका जो इन ऑर्डर में सक्सेसर जो आ रहा है, क्यों ना मैं उसी को ये करूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेते हैं पहले, ठीक है। फर्ज कीजिए मेरे पास ये एक नोड है, इसमें 50 है, ठीक है। अब इसके लेफ्ट में एक नोड है 40। अब चूंकि 40 है, तो क्या 50 का लेफ्ट नोड खाली होगा, नहीं, ये तो इसको पॉइंट कर नहीं। रहा हाँ। है ना, तो ये ऑक्यूपाई है, यस सर। मैं लेफ्ट नोड को इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका राइट नोड भी ऑक्यूपाई है, क्योंकि इसको यहां से 60 है, 60 है यहाँ पे, ठीक है। तो जो 50 है ना, मैं इसका लेफ्ट नोड इस्तेमाल कर सकता हूँ ना राइट नोड इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि नो ये सर। दोनों पॉइंट कर रहे हैं, ऑक्यूपाई है। ठीक है। अब यस। जो 40 है, उसके बाद यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल 30 है, क्या है, क्या 30। इसका ये पॉइंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ कर रहे हैं। इट इज पॉइंटिंग टू दिस इज 30, सो इट इज नॉट हाँ। फ्री। लेकिन नो। इसका राइट फ्री है, इसका राइट क्या हम्म। है, फ्री फ्री। है कि नहीं। और यहाँ पे अगर हम्म। 60 मेरे पास है, फर्ज कीजिए मेरे को अब 65 आ गया नोड यहाँ पे 65, तो इसका राइट पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना, यस सर। बस में आई। यस सर। और मानो यहाँ पे अब और ये कितना था यहाँ पे 65, अब मान लीजिए 55 एक और नोड है 55, तो उसका मतलब इसका लेफ्ट पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, यानी कि 60 का लेफ्ट भी ऑक्यूपाई है, राइट भी ऑक्यूपाई है इस ट्री में। यस सर। अब इस ट्री के अंदर मेरे पास कुछ ही, अभी मेरे पास लेस देन 1 मिनट है, ठीक है, अभी भागेगा तो यस सर। हम रिज्वाइन करेंगे। अब इस ट्री के अंदर